Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra, preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today I come with very special lecture. Today I am going to talk about divine and demonic nature, आसुरी and देवी प्रकृति. आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं उनकी बात करूंगा. I am going to talk about 16th chapter of Srimad Bhagavad Gita. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is, written by A.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON temple. And I would have to say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense it's a pure book of the science and humanity, and I am trying to propagate the humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. So let's get into the chapter number 16, Devi and Asuri Prakruti. डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर. आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं? लॉर्ड कृष्णा हियर क्लियरली स्टेटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द डेमोनिक नेचर. द पीपल हु आर हैविंग अ डेमोनिक नेचर, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द क्वालिटी लॉर्ड कृष्णा हियर मेंशन इन दिस चैप्टर. So Lord Krishna initially started the divine quality. What kind of divine quality person has? Means what kind of quality if the person has, then the person would be considered as a divine nature. Lord Krishna here stated, Sri Bhagavan Uvachah अभयम सत्व समृद्ध ज्ञान योगन व्यवस्थित ज्ञान योगन व्यवस्थित दानम दमस च याजना च ये कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी गोविंद केशव केशीसूदन मुरारी ये स्टेटेड अभयम सत्व समृद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस च याजना च दानम दमस च याजना च स्वाध्याय तपव आर्जवम स्वाध्याय तपवम आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्गम हीर चापलम तेज समाधृति शोचम द्रोह नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत. हे पार्थ, हे अर्जुन, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्गम हीर चापलम तेज समाधृति शोचम द्रोह नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारतः अभिजातस्य भारतः अभयम सत्व समृद्ध अभयम द नीडर द पर्टिकुलर पर्सन हु इज fearless. अभयम सत्व the person who has a truth, always abide with the truth. अभयम सत्व संसुधीरः ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमस च याजना च स्वाध्याय तपम आर्जवम स्वाध्याय तपम आर्जवम. The Krishna said, the supreme personality of Godhead, here Krishna said, fearlessness, purification of one's existence. First quality for the divine nature, fearlessness, always telling the truth. Means however the particular person will get a hurt, but he will never leave. He will surely abide with the truth, and he will definitely tell the truth. Whatever circumstances, whatever situation would be there, but he would like to tell the truth. Purification of one's existence, cultivation of the spiritual knowledge, the spiritual things, the spiritual knowledge, the spiritual consciousness is required. Cultivation, continually, consistently, cultivation of the spiritual knowledge. Charity, the self-control, the performance of the sacrifice, the charity, the self-control, the performance of the sacrifice, the studies of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from the anger, renunciation, tranquility, param santi, aversion from the fault finding, he will never find the fault. Compassion for all the living entity, freedom from the covetousness, gentleness, modesty, steady determination, whatever circumstances, situation would be there, he will never fluctuate, he will never deviate from his path. Means he is steady in the determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, the freedom from the envy and also from the passion for honor, freedom from the envy and from the passion for honor,
These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to the godly man, endowed with a divine nature. Endowed with a divine nature. Listen it very carefully. Ahimsa satyam krodha tyaga shanti pesunam दया भूतेषु लोलुत्वम मार्गम हीर चापलम तेज समाधृति शोचम द्रोहो नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है पार्थ। ये कृष्णा स्टेटेड, बिना कारण तथा अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। इसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, किसी का दोष ना ढूंढना, हमेशा सत्य का आचरण करना, परमात्मा की भक्ति करना और अपना नियत कर्म करना। जो अपना नियत कर्म करता है, हमेशा धर्म में अपने आप को एस्टेब्लिश रखता है, ऐसे भक्त को इस जन्म में मैं संतोष देता हूँ और मृत्यु के पश्चात उसको मैं अपने अंतर में स्थान देता हूँ। दिस इज स्टेटेड बाय लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा क्लियरली स्टेटेड अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग। जो क्रोध ना करता हो, जो उसके जिसके हृदय में त्याग की भावना हो, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पेशुनम, जो हमेशा ट्रैंक्विलिटी रखता हो, हमेशा परम शांति परम गति में हो। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम हीर चापलम तेज समाधृति शौचम द्रोहो नाति मान्यता भवंती संपदम देवी। भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारतः। ये कृष्णा फर्दर स्टेटेड, here Krishna stated about these particular qualities, about the divine nature. The particular person has a divine nature, and another quality of demonic nature I am going to talk in my next video. I hope you all can understand. If you are having any questions, any doubt in this particular divine quality, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.